class 12th biology. Welcome you all with another topic, that is DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? It is the technology used for identification of individual at genetic level. This technology was first developed by Alex Jeffrey. DNA fingerprinting involves identification differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA at different peak during density gradient centrifugation. The bulk DNA form a major peak and the other small peak are referred to as satellite DNA. These sequences show high degree of polymorphism and form basis of DNA fingerprinting. Polymorphism in the DNA sequence is the basis of genetic mapping as well as DNA fingerprinting. The inheritable mutation is observed in a population at high frequency. It is referred as DNA polymorphism. The principle of DNA fingerprinting is based on matching of VNTR, variable number tandem repeats, of DNA collected at crime spot with suspect person DNA. जो सस्पेक्ट पर्सन है उसके DNA के साथ जो कहीं पर कोई क्राइम सीन हुआ है वहाँ पर जो भी हमारे को क्या मिले हैं, DNA के ट्रेस मिले हैं, उनको मैच कराना. VNTR, variable number of tandem repeat, it is also called as mini satellite that show very high degree of polymorphism. VNTRs are very specific to individuals and differs from person to person. It shows some similarities between family member. जो VNTR हैं हर इंडिविजुअल के अलग होते हैं, वो दूसरे इंडिविजुअल से क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं. VNTRs of identical twins are same, hence it is not possible to identify individuality in identical twins by DNA fingerprinting technology. Step involved in DNA fingerprinting technology are: first one, we will take the cell sample from the source, from the crime site, from a suspected person, from anywhere where we want to use DNA fingerprinting. Then extracted the DNA from the source, collected source. Extraction of DNA from sample, for example, it may be the blood cell, hair follicle, semen, etc., skin. Then cleavage of DNA by restricted enzyme. DNA treated with restricted enzyme that divide DNA into fragment. Means restriction enzymes is behave just like a molecular scissor. It cut the DNA molecule, that's why it is called restricted enzyme. Then separation of DNA fragment by gel electrophoresis methods. DNA fragment gets separated with the help of a technique. That technique is called gel electrophoresis. Then transfer to a membrane, southern blotting. That fragment get transferred to the southern blots. Southern blotting technique, it is the technique of transferring DNA from agar gel to nylon sheath. Then binding of radioactive DNA probe to specific DNA fragments, and finally membrane was free of excess probe. That membrane, those excess probe, it get washed. Probe, single stranded polynucleotide fragments complementary to specific sequence of nucleotide of DNA is called probe. It is mainly used in identify VNTR and desired genes. मीन एक तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक फ्रेगमेंट है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है. देन एक्स रे फिल्म यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियोएक्टिव पैटर्न.
finally we compare the DNA samples, that is called comparisons. For example, that one, the DNA fingerprinting technique involves southern blots and hybridization using radio-labeled VNTR as a probe. It includes isolation of DNA, digestion of DNA by restricted endonuclease, separation of DNA fragment by electrophoresis, transferring of separated DNA fragment to nylon sheath, that is also called southern blotting techniques, hybridizing using labeled VNTR probes. That another one, detection of hybridized DNA fragment by radio or autoradiography. So where the DNA fingerprinting technology is applied, that is called application of DNA fingerprinting technology. It is used to identify criminal and rapist, to solve paternal dispute, to solve immigrant problem, to identify dead bodies of soldiers died in war, to identify dead bodies of person died at accident and bomb blast, to identify racial group, to detect inheritable disorder, to detect donor cell in case of transplantation. अब क्या करते हैं, क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? इट इज ए मिसनॉमर, जस्ट लाइक जिस तरह दो इंडिविजुअल के डीएनए के हाथों के फिंगर के प्रिंट सेम नहीं होते हैं, उसी तरह दो इंडिविजुअल के जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पैटर्न, वो एक जैसा नहीं होता। अब जब दोनों का सीक्वेंस एक जैसा नहीं होता तो उसमें क्या करते हैं हम, बल्क डीएनए से हम पहले किसी सेल से या कोई भी ट्रेस है उससे हम सेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस सेल के न्यूक्लियस से हम उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसके फ्रेगमेंट में कट किया जाता है। फ्रेगमेंट में कट करने के बाद उसको सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और रेडियोएक्टिव प्रोब की मदद से हम उसकी क्या कर लेते हैं, कॉपी ऑब्टेन कर लेते हैं, हमें बैंड ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, जब बैंड ऑब्टेन हो जाते हैं तो सेम बैंड जो भी, अगर मान लिया कोई क्राइम स्पॉट हुआ है तो क्राइम स्पॉट में जो हमें सैंपल मिला है, जो भी सेल मिले हैं, उस सेल से हमने डीएनए के बैंड ऑब्टेन कर लिए। सेम जिसमें हमें सस्पेक्ट जो पर्सन है, उन पर्सन से भी हम उनका सैंपल लेके उनके भी बैंड ऑब्टेन कर लेते हैं। अब बैंड ऑब्टेन करने के बाद जितने भी सस्पेक्ट हैं उनका बैंड पैटर्न किसके साथ मैच कराया जाएगा, उनका जो बैंड पैटर्न है वो क्राइम स्पॉट में मिला बैंड पैटर्न के साथ मैच कराया जाएगा। अगर मान लिया सपोज वो बैंड पैटर्न मैच कर गया तो इसका मतलब है कि जो क्राइम स्पॉट में जो इंडिविजुअल था और जो सस्पेक्ट था वो दोनों क्या हैं, सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बैंड पैटर्न दिख रहा है, सपोज इन सी के केस में एक बैंड पैटर्न हमने ऑब्टेन किया डीएनए के फ्रेगमेंट का। जब बैंड पैटर्न ऑब्टेन करने के बाद जो भी सस्पेक्ट हैं, मान लिया दो सस्पेक्ट हैं, दे आर द टू सस्पेक्ट, वन इज ए अनदर इज कॉल्ड बी, इन दोनों ए और बी सस्पेक्ट के भी हमने सैंपल लिया और उनसे हमने क्या किया, डीएनए ऑब्टेन किया और उनका फिंगरप्रिंटिंग कराई, या उनकी हमने क्या की, बैंड ऑब्टेन किया। जब ऑब्टेन किया तो हमें ये तीन बैंड पैटर्न मिल गए, सी, ए एंड बी। अब मैच कर रहे हैं, सी जो था वो क्राइम सीन में मिला, जो भी ट्रेस था, जो भी क्लू था वो बैंड पैटर्न है, और ए एंड बी सस्पेक्ट के हैं। तो इसमें से जिससे मैच कर रहा है, ये सी वाला बी से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्राइम सीन में था, जो पर्सन का जो हमें ट्रेस मिले थे वो किससे मैच कर रहे हैं, बी से मिल रहा है। तो बी क्या है, द फॉल्टी पर्सन है, गिल्टी पर्सन हो सकता है। ठीक है, बिकॉज दोनों मैच कर रहे हैं और दोनों इंडिविजुअल सेम होंगे। सेम थिंग अगर कोई पैटर्नल डिस्प्यूट हमें सॉर्ट करना है और सी, अब इस केस में नाउ द सी इज द ब्लड, सी इज द डीएनए बैंड्स ऑफ अ चाइल्ड, किसी चाइल्ड का डीएनए का बैंड का पैटर्न है वो सी में मिल गया। एंड सेम थिंग दो पेरेंट्स उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, पेरेंट ए एंड बी आर क्लेमिंग फॉर द
चाइल्ड, हमने बैंड पैटर्न ऑब्टेन किया। बैंड पैटर्न ऑब्टेन करने के बाद जिसके ये बैंड पैटर्न मैचिंग करेगा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली मैच। यहाँ पर ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। क्राइम सीन में एग्जैक्टली मैच कर सकता है बिकॉज द सेम इंडिविजुअल, दैट मे बी द सेम इंडिविजुअल, बट हियर वन इज द ऑफस्प्रिंग, अनदर इज द अनदर पेरेंट्स। तो जिस पेरेंट के साथ ये मैक्सिमम मैच कर जाएगा, मान लिया अगर जो आपस में जो रिजेंबल होंगे उनके बैंड पैटर्न बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे बट बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, डिफरेंसेस होगा उसमें भी, क्योंकि दो इंडिविजुअल के डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। यहाँ भी उनका बैंड पैटर्न क्या होगा, लगभग मैचिंग होगा। इट इज़ नॉट ए सिमिलर बट इट समहाउ मे बी सिमिलर। सो जिसके साथ वो ज़्यादा मैच करेगा दैट पर्सन क्या हो जाएगा, उसका पेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक मिसनॉमर है और इसमें जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड VNTR, दैट इज द सेगमेंट्स। Now a quick look about some step of DNA fingerprinting. These are The DNA is isolated from the sample of blood cell, hair root cells, semen, bone collected at crime spot. The DNA of suspect also collected and isolated separately. The isolated DNA is treated with restricted endonuclease to cut into number of fragments. The DNA fragments are separated according to their length on gel slab using gel electrophoresis. The DNA stain on gel slab is treated with alkaline solution to split double strand into a single strand. The single strand DNA is transferred to nylon sheath using southern blotting technique. The single strand DNA is hybridized with the radioactive probe to VNTR. The excess of probe are washed off. Nylon sheath is X-ray photographed to get band of VNTRs. The band of X-ray sheath is the DNA fingerprint. Comparison the DNA fingerprint of sample collected at crime spot with suspect identified the individual.